Part A, I hope this was fairly easy, which was 1 plus x multiplied by 1 plus x squared, and all of you got this really nice answer, I hope, which was 1 plus x squared plus x cubed, right? Okay? Yeah? Everybody got this, right? Now, when you did the next part, part B, this was 1 plus x multiplied by 1, and also अब keep on because अगला जो आ रहा है काम वो factorization का आ रहा है. So note, आप लोगों ने factorization means can you break it up into simpler products. So now if you see something like this, it may not be obvious how to factorize it. So remembering this trick will help you factorize things. Okay, this is a very nice trick. If you have a sum of 1 plus x squared plus x cubed, it can be factored into two polynomials, 1 plus x multiplied by 1 plus x squared. Okay? ये reverse equality याद रखना is kind of fun. But what about this one? What did you find for this one? One से लेकर all the way up to x to the power 12, 14, 15, yeah. So get this really amazingly beautiful result. Sorry? Because you didn't calculate carefully. And the way you should have calculated is, you should have multiplied 1 plus x squared, and you would have gotten 1 plus x squared plus x cubed, right? So the way I would have calculated is, this is my calculation, this is how I would have done it. So in fact, so this is what I would have done. I already know the answer to this, right? This is equal to 1 plus x squared plus x cubed. That I already know. This multiplied by this is this, right? But now you can see, now that's why I was saying, okay, why did you get this 1 plus x squared plus x cubed? That's what you want to muse about, right? Why did you get this answer? I mean, किसी को पता है कि like why are you getting this answer? And you can see जब आप 1 से multiply करते हैं तो आपको 1 plus x मिलता है. जब आप x squared से multiply करते हैं तो everything goes up by a power of 2. So 1 turns into x squared and the x turns into an x cubed, right? Is this clear? ये वाली power. अब यहाँ पे जब मैं 1 और इसको करूँगा combine, तो what will I get? I'll get 1 plus x to the 4th plus x to the 8 plus x to the 12, right? Another way of thinking about the same thing is कि यहाँ पर I could put in this as y, and this would be y. What? If this is y, if x to the 4th is y, what's x to the 8th? Y squared. So it is 1 plus y squared, which is exactly the same calculation as here. Okay? So then it would be 1 plus y squared plus y cubed, exactly as it ought to be. ठीक है ना? Is this clear? जी. No, obviously not, because 1 plus x squared whole squared is 1 plus x squared plus 2x. Is that what you're saying? 1 plus x squared. Have I understood your question correctly? Maybe this is what I was answering, and this is just false. Is that what you were asking? That's obviously wrong, right? Put x to be 2. This is 5. 2 plus 1 is 3. 3 ka square is 9. Is 5 equal to 9? The answer is no. It's obviously wrong, right? There is nothing more to think about. Okay. So now you see this structure? कि हमने वही चीज़. So Gelfand is using part A repeatedly here. Okay. Now again part A comes back in part B, right? So see the beauty of this. Now जब हम 1 से multiply करेंगे, you will get all the powers up to x cubed. Then what will happen? X to the 4th से multiply करेंगे. तो x to the 4th से शुरू होगा, x to the 4th, x to the 5th, x to the 6th, x to the 7th. Then x to the 8th से multiply करेंगे. x to the 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, right? The structure is so beautiful. I don't have to do
any long, tedious, stupid calculations, right? The answer turns out to be like I didn't actually, अगर आप मेरा देखें जो मैंने calculation की है, I could show you I didn't even, yeah, I did all of this in my head and I could just write out the answer because I had done part A. So by looking at it, you could just write down this answer, which is this answer comes out without actually ever having to multiply, x to the 15, 8, 12, 14, 15, yeah, x to the 15. So this answer emerges without doing a calculation. That is what I want you to appreciate, right? एक तो होता है ना बेवकूफ़ाना अंदाज से मल्टीप्लाई करते रहें बैठ के कोई 8-10 लाइनों के अलजेब्रा के बाद ये आंसर निकल आएगा. But that would be a stupid way of organizing your calculation. ये बात समझ रहे हैं? There is a beautiful structure to the calculation. Use it to your advantage. Is this clear? ये हर एक को बात समझ आ रही है? या कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है टू द कैलकुलेशन. यू डोंट वांट टू लूज अ स्ट्रक्चर. इफ़ यू लूज अ स्ट्रक्चर, अगर आप वैसे माइंडलेसली मल्टीप्लाई करें तो फिर तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है. ये काफ़ी पेनफुल है. मुश्किल तो नहीं है, पेनफुल है, बोरिंग है. इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ रही है? दिस इज़ एन एलिगेंट कैलकुलेशन. अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज़ अ बोरिंग, मंडेन way of doing a calculation. Okay, so don't do it this way. Okay, let's move on. But sit down properly. Okay, this is part B. Now अब मुझे part C organize करने का आप मुझे कोई help करें, because we want to think about these calculations. देखिए, mindlessly calculate करना बहुत आसान है. Any idiot can do a mindless calculation. Okay, that's very easy to do. We don't want to do a mindless calculation. We want to do a not a mindless calculation, but a mindful calculation. That's what we want to do. Okay, we want to do a mindful calculation. So let's look at the next one and help me do a mindful calculation, which is part C. So this is the calculation. So I've stolen Rafi's book, so he can't do any work. Okay, so 1 plus x squared plus x cubed, और इसको अगर हम square करें, right? So this is what we're trying to do. And why is my line going up for some reason? I don't know why. 1 plus x squared plus x cubed. I want to multiply it by itself. That's what I want to calculate. How will we do that? How can we structure this calculation? Any ideas? Yes, one person here, one person there, 2 people. Anybody else who wants to tell me? 3. G, how do you want to structure your calculation? Okay. I'll write it out into 2 parts. I'll do that. I could do this, which is I'll write it out for you, but you'll help me. So अभी तक तो structure नहीं हुई ये calculation. This is still okay. So I wrote it out this way. Now what? कर दिया. अब क्या करूँ? What's the next part? How do I multiply? Okay, एक एक करके multiply तो करना है. That is true. But is there a better way to structure it? जी, आप. Sorry. 1 plus x squared plus x cubed लिख लिया. फिर क्या करूँ मैं? 1 plus इसको I could write it at 1 plus x multiplied by 1 plus x squared. और इसको भी मैं यूँ लिख सकता हूँ. फिर क्या होगा? लिख लिया. I agree, but how does it help me expand it out? That you are writing, you are completely correct if you say this is going to be equal to 1 plus x whole squared multiplied by 1 plus x squared whole squared. But now that is helping me factorize it, but it's not helping me expand it out. I want a simple way to expand it out. Ji, well. First of all, we multiply by 1 and the factoring from part A and part B continues. First, the power start from x to the 1 till x to the... Okay, I multiplied it by 1. Now what? Then we multiply x continues from x to the 1 till x to the 4. A power increase. Yeah, but yes. Is there a better way to structure it? क्या करूँ मैं? There's a little trick that I want you to tell me.
1 + x स्क्वायर को a ले लेते हैं, लेकिन फिर आखिर में जब a स्क्वायर्ड करना पड़ेगा तो फिर मैं तंग होऊंगा आखिर में जाके, राइट. इट स्टिल हैज़ टू बी डन. अगर मैं इसको सिर्फ ये करूं जो आप मुझे बता रहे थे, बट आई डू अ लिटिल छोटा सा एक ट्रिक. जी. So what if you just add the powers of x to the बट देयर आर मल्टीपल, या लेकिन यहाँ पर, लेकिन बेटे यहाँ पे फ़र्क है. बिकॉज यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल if you look at this x, if you look at the power of x, there are multiple things contributing to x, because 1 times x is contributing to it and 1 times x is contributing, so there are 2 contributions to it. अगर मैं x squared देखूँगा तो there will be multiple contributions to it. एक x into x की contribution होगी, एक x squared into 1 की contribution होगी और एक 1 into x squared की contribution होगी. So there are multiple contributions coming into it. जी. Yeah, exactly. That's what I want us to do. Okay, then multiplied by x and I'll get this plus x. So I want to see a pattern emerge. Okay? फिर जब मैं x squared से multiply करूँगा तो I'll get और जब मैं x cubed से multiply करूँगा, now you may see that I am wasting paper here and you're completely correct. Lekin it's important to get this idea out. So I've structured the same thing. मैंने कुछ कम कर दिया इसका. x to the 6th शायद मैं खा गया और यहाँ पे भी मैं खा गया और यहाँ पे मैं भी खा गया शायद. There are 4 terms, right? Yeah, this looks a bit better. Okay. Now there's a pattern emerging. I mean, algebra जब आप शुरू करते हैं तो there were patterns से शुरू कर रहे थे, right? So now you can see what is the pattern, right? It's going to be 1 plus 2x plus 3x squared plus 4x cubed plus 3x to the 4th plus 2x5 plus x to the 6th, right? Is this clear? So this will be, so it will be, so pattern ये बन रहा है essentially कि पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा. This is the pattern that is emerging out of it. Is this clear? Yeah? So this I could write out as 1 plus 2x plus 3x squared plus 4x cubed, and now I decrement plus 3x to the 4th plus 4x cubed, plus 2x to the cubed, 2x to the 5th, 2x to the 5th plus x to the 6th. Okay? Right? Do you see the pattern? Right? Okay? Is this clear? But now comes the interesting question, right? So, अगला वाला सवाल. So, is this clear? यहाँ तक कोई questions? Right? Okay? So, now let's muse about this fact के can you generalize this question? Can anybody generalize this question? आपसे कहें एक और सवाल बना के दें to grade 9 students. Here's a little quiz coming up. आपकी quiz आ रही है अगली. So उसके लिए कौन सा सवाल आप बनाएंगे? You've learned how to multiply numbers. And Daniel, you should be thinking, not calculating right now. It's time to think at the moment. Mr. Zikriya also wants to calculate. It's not the time to calculate, it's time to think. Muse about the calculation. Sir, जी. we can do a plus b multiplied by a square. इसी सवाल को just extend it to the next level. Generalize. किस तरह? I want you to generalize it now to so Gelfand generalized it. He is showing you a pattern. What would you do? If you wanted to make it a bit more computationally, like you want to see a beautiful pattern emerge out of it. You can put the value of 1 plus x here. So 1 plus x plus x square plus x cube plus dot. What would you get if you did this? And
This would be a generalization of it. Right? Do you understand that? These are powers of 2. 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 2, 2 raised power 3, 2 raised power 4. This would be 2 raised power n. So what would be the answer if somebody were to tell you this? Without doing a calculation, can you tell me the answer now? One line. Just one line. जी. Power जब 2 पहले ऐड होगी तो 2 Yeah. plus 4 plus 8 आखिर में जाके जो आंसर आएगा Yeah. x की पावर 1 से लेकर उस I can tell you that answer is actually 2 raised power n plus 1 minus 1. That's the answer. That's the sum. Okay, now tell me what the answer will be. This is the sum of all the powers, if you want to do. का sum ये है. x की पावर 0 से x की पावर 0 से लेकर Exactly. Yeah, that's a beautiful answer. So it's like 1 plus x squared plus dot 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 all the way up to x raised to the power 2 raised to the power n plus 1 minus 1. That's a beautiful answer. Without doing a calculation, I can write this answer down. Right? This is the beauty of the calculation. Do you see it? कि आपको ये नहीं पता, ये अभी हम सीख लेंगे, अब 2-3 हफ्तों में हम सीख लेंगे. I mean, this is an easy thing that we'll do in a few weeks or something. But given that you know the sum, this is a beautiful answer, right? मैंने इतनी लंबी कैलकुलेशन अगर आपको मैं ग्रेड 8 में दे देता या आपको मैं थोड़ी देर पहले दे दूँ, okay, let's say आपको ये सवाल दिए बगैर और ये किए बगैर आपको ये कैलकुलेशन मिल जाए तो आप क्या करेंगे? सर पकड़ के बैठ जाएंगे, राइट? ये क्या में हाउ डू आई मल्टीप्लाई दीज पॉलिनोमियल्स, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट? अगर आपके पास ये बैकग्राउंड ना होती, हाउ टू ऑर्गेनाइज दिस कैलकुलेशन, अगर मैं आपको सिर्फ ये सवाल देता, राइट? यू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग कि आई कुड और गेलफंड कुड हैव गिवन यू दिस प्रॉब्लम. यू सी दिस प्रॉब्लम एंड यू वुड बी लाइक दिस इज एन इम्पॉसिबल प्रॉब्लम टू डू. कौन इसको मल्टीप्लाई करेगा बैठ के? लगे रहो, ये तो पेजेस के पेजेस भर जाएंगे इसको कैलकुलेट करते हुए, राइट? बट नाउ यू कैन डिमांड कि मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए एंड यू कैन राइट डाउन द आंसर इन 1 line. That's such a nice calculation. Like, I want you to enjoy this, like the beauty of this thing is something to be appreciated, right? I mean, that's what it is. Okay, anyway, that was just aside, not a main theorem. लेकिन ये कि like you want to think about कि what can you do with जो आपको सवाल मिल रहे हैं, तो it's an interesting thing to muse about कि मैं क्या कर सकता हूँ इस सवाल के साथ. Anyway, okay, so let's come back to the next one. So now when you encounter this problem, part D, so you encounter part D, right? So encounter part D, which is what? 1 plus x. Yeah, 1 plus x squared all the way up to x to the 9 or 10, x to the 10 squared. So now what's your idea and explain why? This is now too painful a calculation for me to do, so I just want to write down the answer. As you can see, laziness is extreme in mathematics. You don't really want to do any work. So why, what would be the answer be and why? जी ओके जी, इसका क्या आंसर होगा? तो आप कह रहे हैं 1 plus 2x plus 3x squared और हाईएस्ट और आखिर में आएगा x raised to the power 20, that would be the highest power. और फिर यहाँ पे होगा जो भी है 2x raised to power 19 प्लस डॉट 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 और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी? 11 क्या? 11 ओके, x raised to the power 10. Do people buy this story?
मुझे भी नहीं समझ आई, लेकिन मेरे को समझाएगा अभी, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने लिख लिया है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। आपको मुझे समझाएगा अभी जी। पार्ट सी में मैंने लिखा था कि उसमें इस तरह नहीं क्वेश्चन था, लेकिन मिड टर्म 4 थी, उसमें मैक्सिमम कोएफिशिएंट 4 तक हो गया था, उसके बाद उसी तरह -1 सॉरी, मैक्सिमम कोएफिशिएंट हमारा 4 तक गया था, दैट इज़ ट्रू। ओके, वहाँ पे हमारी 11 टर्म्स हैं, तो हम आपके ख़्याल में 11 तक ये जाएगा। वाई इज़ इट कि 11 तक जाएगा? कैन यू गिव मी अ जेनेरिक? ये तो आपने देखा ना कि 3 इज़ अ प्राइम, 5 इज़ अ प्राइम, hence all odd numbers are prime is not a good statement to give. You have to give me a reason for this pattern, right? Give me a reason for the pattern. That's what I'm looking for. There is a pattern emerging. आंसर हमने एक लाइन में लिख दिया है। ओके जी, रीज़न क्या है? यहाँ पे हमने एक पैटर्न नोटिस किया था कि हर दफ़ा एक टर्म आगे जा रहा है। बिल्कुल जा रही है आगे। तो उससे वहाँ पे हमारे पास टोटल 11 थी, तो यहाँ पर वो मिडल तक गई और उसके बाद डिक्रीमेंट स्टार्ट हो गई। जैसे वो मिडिल तक गया है। मिडिल तक कहाँ तक गया? मिडिल का समझाएं, मिडिल क्या चीज़ है? एक्स क्यूब्ड आपके, सो इट वेंट अप टू द लास्ट टर्म हेयर, यहाँ तक जिसको आप मिडिल कह रहे हैं, राइट? द लास्ट टर्म जो पहला एक्स क्यूब्ड था, जिस तरह एक्स 6 अगर वो है तो यहाँ पे एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब वाज द हाईएस्ट पावर जहाँ तक उसको मैक्सिमम ओवरलैप मिलना था, राइट? डू यू अंडरस्टैंड ये क्या कह रहे हैं? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन। द आइडिया वाज कि हमारे पास ये कार्ड है, राइट? हम हर बार कार्ड को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते हैं, राइट? अगर हम हर बार कार्ड को एक पोजीशन आगे शिफ्ट करते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स कैन आई शिफ्ट बिफोर आई लूज ऑल ओवरलैप? आई कैन शिफ्ट इट 4 टाइम्स। इज दिस क्लियर? राइट? एक बार, 2 बार, 3 बार, दिस इज द लास्ट आई कैन शिफ्ट। क्योंकि अब मैं अगर इसको और शिफ्ट करता हूँ आगे तो एक टर्म, आप ये बात समझ रहे हैं कि इस टर्म से मेरा ओवरलैप एंड कर जाएगा, राइट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? कि अगर मैं इसको और अब शिफ्ट करता हूँ आगे तो द ओवरलैप विल बी गॉन. So the maximum overlap I'll get is how many shifts I can make, and there'll be 1, 2, 3, 4 shifts that are allowed. A 0 shift, a 1 shift, a 2 shift and a 3 shift. Is it clear? तो वहाँ पर चूँकि मेरे पास 11 terms हैं, तो that means कि I'll be able to make 11 shifts, right? And the highest power will be this power जो वहाँ पर equivalent होगी, because that's the power जहाँ पे हमेशा overlap रहेगा. So if there are 11 overlaps, then each coefficient is 1 and I'm adding 1 11 times, so the answer has to come out to be 11x to the 10th. Okay, is this clear? और बाकी भी आप इसी तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे overlaps कम हो रहे हैं, यहाँ पे overlaps बढ़ रहे हैं ऐसा ऐसा, और यहाँ पे overlaps कम हो रहे हैं. That's exactly the same pattern that is emerging. So the best way to think about it is like a card, और उसको आप shift करते जा रहे हैं आगे आगे, and that is why पहले आपका increase कर रहे हैं coefficients, यहाँ पे maximum आता है, and then they start to decrease. Okay, is this clear? The reason why this has to be true, it's not हमने सिर्फ pattern देखा है, pattern का हम reason भी explain कर रहे हैं. Okay, it's not enough. जैसा आपने इम्तिहान में किया था कि आपने pattern, बहुत सारे लोगों ने देखा कि the pattern is 3 raised to the power n, but you did not give me a reason for 3 raised to the power n. Is this clear? जो आपका सवाल था, आपने पैटर्न देखा कि वो 9 और 27 है, hence 3 raised to power n का पैटर्न होगा. तो a lot of people got that pattern, but the reason for the pattern was not explained. So यहाँ पे the reason for the pattern has to be explained, because if there's a pattern without a reason, then the pattern could change. Is this clear? ये बात समझ आ रही है आपको? अगर एक पैटर्न आप देख रहे हैं so which has no reason, right? So then the pattern can change. But if the pattern comes with a reason, then the reason is stronger than the pattern, because the pattern is being dictated by the reason, and the reason has mathematical basis for it. Do you understand it? So patterns खाली देखकर आप फैसले नहीं करते. You look at कि patterns के पीछे reasons के हैं. तो हमने ये reason इसका देख रहे हैं. Okay? Okay, now comes something fun, hopefully. Part E. We were doing kiddie stuff. Well, this is also kiddie stuff, but still fun kiddie stuff. So now, this is a nice question again. Well, okay, all questions are nice. So I want the coefficient of x to the 30th, x to the 29th, क्या होंगे?
जी उसने सवाल पूछा है या जी वाई 1 and 2 1 तो मुझे समझ आ गया। x to the 30th का क्या होगा 1 और x to the 29th का क्या है 2। एवरीबडी एग्री 2? सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आल्सो जी। सर पहले तो हम लोगों ने उसका स्केयर लिया था तो हम उससे पता चला कि वो 1 और 2 है। अब तो क्यूब है, अब हम नहीं कर सकते। आई एग्री। अब तो क्यूब कर रहे हैं तो इनसे पूछें जी, इनसे पूछें कि ये जो क्यूब कर रहे हैं पहले तुम स्क्वायर कर रहे थे अभी आपने क्यूब किया है तो फिर क्यों दोबारा वही हो रहा है। अब तो वो वाली स्टोरी सही नहीं है। जी बेटे एक मिनट आपस में डिस्कशन नहीं, अभी मैंने इनसे सुन लूँ फिर मैं आपकी बात भी सुनता हूँ जी। कोफिशिएंट पे नहीं पड़ेगा आप ये कह रहे हैं। ओके मुझे इस बात का आर्ग्यूमेंट समझ नहीं आया। आर्ग्यूमेंट क्या है आपका कि क्यों नहीं कर पड़ेगा जी। अच्छा हमने ऊपर की पावर चेंज की है, आप कह रहे हैं कोफिशिएंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सवाल मैंने पूछा है क्यों, उसे जवाब क्या दिया आपने? I hope everybody agrees. I hope everybody agrees. Agreed? आप क्या आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं मुझे ज़रा समझाएं, मेरी अकल से ऊपर जा रहा है ये आर्ग्यूमेंट। आई डोंट अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट, सो प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड द आर्ग्यूमेंट। आप दोनों मुझे आर्ग्यूमेंट दे रहे थे, मुझे समझ नहीं आया जी। बेटे आप लोग कहते हैं ना क्योंकि का मतलब ये नहीं होता कि आप मुझे कोई रीज़निंग दे रहे हैं। सो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है कि आप लोग एक इज़ अ वेरी क्रिटिकल थिंग इन लाइफ विच इज़ टू नो व्हाट यू नो एंड टू नो व्हाट यू डोंट नो। ओके सो जब आप मुझे इस तरह की रीज़निंग देते हैं, and we'll be stopping here I guess. If you give me a reasoning, I ask you, so why does the sun rise from the east? So आपका सवाल है why does the sun rise from the east? So I say because the wind is blowing and the birds are chirping and there is oxygen in the atmosphere and nitrogen has 80% nitrogen होती है in the air and 20% oxygen होती है and there are also trace gases. All these things are true except it has nothing to do with the question. Okay? Let us see the better. So the deal is कि आप लोग जब मुझे reasoning देते हैं think through कि are you actually answering the question or are you talking complete nonsense? And you have to think about it very carefully कि क्या वो सेंस बनती है या क्या वो सेंस नहीं बनती। So can somebody help me give me the answer to this question before we leave? The next sir is about to show up. The clock is ticking. Time pressure. जी क्यों 3 and 2? 1 and 3. Why 1 and 3? फिर तो पास्कल्स ट्रायंगल तो इस पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करेगा unless you do a very generalized version of some Pascal's triangle. You have to do a lot of work. Okay, write down the homework please. Homework is questions 100 to 105. Oh sorry, complete 90 से लेकर जो आपने क्लास में कर लिया वो obviously included है इसमें 100 through 105.
and 107. So this is due, I guess, on Wednesday. On Wednesday? Yeah, because I don't think we have a class tomorrow. So that means we have a class on Wednesday. So I can't have it due tomorrow, even if I wanted to. Okay? ठीक है जी? और एक चीज़ ध्यान रखें, आपने मिड टर्म्स में यू मे हैव अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि struggling with questions is very important, right? I mean, the homework has been relatively poor quality, and the poor quality of homework is reflecting in the midterms. Okay? Unless you do high quality homeworks, you will not be able to get good marks in your exams. Okay? So high quality homework demands फितरत लहू तरंग है, गाफिल न जल तरंग, राइट? फितरत आपसे लहू मांग रही है, आपका पानी से ये साज नहीं चलने वाला. इट इज़ नॉट गोइंग टू, दिस जो इंस्ट्रूमेंट है डिमांड्स ब्लड आउट ऑफ योर लाइफ, इट डजंट डिमांड, पानी से ये साज नहीं चलता. तो आपको वो करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. एंड आई वुड लाइक यू टू म्यूज़ अबाउट इट, एंड if you feel bored by this question, as an optional thing you can add x to the 28th and you will have a bit more fun. अगर आप करना चाहें, अपने आप को और अम्यूज़ करना चाहें, तो x to the 28th, and that is what you have to get to that stage कि you want to amuse yourself with this question. Okay, so we are done. मैं साइन बाद में कर लूँगा. Your teacher is here.